Tena koto katoa, and wishing everyone a happy Gandhi Jayanti from my living room here in Tamaki Makaurau, Auckland, Aotearoa, New Zealand, and from CARE at Massey University. So I want to warmly welcome everyone who's here. We're going to be doing a reading on democracy and secularism to mark 152 years since Mohandas Karamchand Gandhi was born in a small town in India's state of Gujarat. Now, before we begin, I want to start with a karakia, with actually a devotional song that was Gandhiji's favorite, Vaishnava Janako. It was written in the 15th century by the poet Narasimha Mehta in the Gujarati language, and it speaks to the ideals of compassion and respect, and to encourages us to practice forbearance and to forsake greed, anger, and delusion. वैष्णव जन तो तेने कहे जे पेड़ पर आए जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहे जे पेड़ पर आए जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे वैष्णव जन तो तेने. This evening, some of us will be reading Gandhiji's texts, and some of us will be reading commentaries. But I want to encourage everyone to practice the ideals of nonviolence in thought, speech, and actions during this session. Allow me to say a few words on Gandhi to set the context and to kick us off. So, as I've said, today marks 152 years since Mohandas Karamchand Gandhi's birth in the small town in India's state of Gujarat. Raised in a conservative, middle-class, upper-caste milieu, Gandhi would develop his political consciousness in England, where he studied law, and in South Africa, where he started his legal practice by working against racist colonial policies. As Gandhi matured, he would return to India and become a leader of the burgeoning nationalist movement, eventually theorizing and implementing satyagraha, or truth force, a mode of non-violent direct action that politically and economically crippled the British Raj. Due in large part to Gandhi's leadership and ideology, India was able to peacefully overthrow British colonialism and declare independence as a secular, democratic governed republic in 1947. In the years since India's founding and Gandhi's assassination, shortly thereafter by Hindutva forces, India has veered considerably away from the vision Gandhi has advanced. Caste-based oppression is still a reality. Forms of socialism advocated by Gandhi and India's first Prime Minister Nehru have largely been overtaken by drastic economic inequality and the long-standing tradition of secularism, which is now giving way to a resurgent Hindutva movement that seeks to define India as an explicit Hindu nation. Now, it's important to note that Hindutva is not Hinduism. Hindutva names how this extremist nationalist political ideology has come about over the past century, which is distinctly different from, and indeed detrimental to, the diverse range of religious and spiritual practices of Hinduism. As a matter of fact, it was an RSS cadre of the Hindutva movement who was responsible for the assassination of Gandhi. The project of Hindutva is organized around the idea of promoting India as a Hindu Rashtra, nationalism, which is entirely opposed to indeed aims to undo Gandhi's India, the secular foundations, as per its constitution of 1949, as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Now, this is the reason
one of the reasons for Hindutva smear campaigns against Gandhi led by Hindutva, and therefore it becomes urgent, more than ever, to recall his teachings and uphold his work to strengthen secularism and democracy, which, after all, Aotearoa New Zealand and India have in common. There is another reason Gandhi is taking quite a bit of beating of late, on account of his views on race and caste, but that doesn't make him less of an important figure. I want to borrow the words of Vijay Prashad, who writes this, quote, "For Indians, Gandhi's limitations on the issue of caste have been apparent for a long time and well documented. Apart from the writings of Ambedkar and Periyar, and a host of others who are less well known, no major bourgeois Indian nationalist wrote a text that eviscerated caste hierarchies. Nehru's Discovery of India of 1946 is mute on caste, although it was Nehru who invited the author of Annihilation of Caste, Dr. B.R. Ambedkar, to draft the Indian Constitution. That was a sign that he grasped the problem, something utterly alien to the Hindutva tradition of today that valorized the caste system even more than Gandhi ever did. No one who studies Gandhi should defend Gandhi's views on race and caste. But it is not enough to say that Gandhi was a man of his times. Many people in his times took strong public positions against both caste and race hierarchies. Gandhi's temperament was conservative. Overthrowing social hierarchies troubled him. And yet, this does not make Gandhi any less of an important figure in the anti-colonial movement. It was Gandhi who turned bourgeois nationalism in India towards the peasantry and helped build the basis for a protracted mass struggle, 1917 to 1947, that broke the back of British imperialism. Gandhi, the real man, disappears into Gandhi, the myth. This took place not after Gandhi's death, but during his life. He inspired people from one end of Asia to the other end of the America to fight against colonialism and all that it stood for. It is impossible to take that away from the historical record, that feat of inspiring the world with a simple message: we refuse to listen to you. But myths are dangerous, and always beneath them are real people, and real people can be a little bit disappointing. For years now, biographers have pulled out all kinds of elements in Gandhiji's life that make the sensitive person uneasy. Scrutiny of the kind given to Gandhi will necessarily tarnish the myth. Now, all these debates are important. No person is saintly. No one should be worshipped. More important than Gandhi were the freedom movement in India, and the freedom movement in South Africa, and the freedom movement in the United States and elsewhere. Leaders such as Gandhi play a key role in these movements, but they do not define them. It would be a pity, though, and in fact, no, it would be an injustice if we were to give in to the Hindutva smear campaign. Against the backdrop of this attempted takeover, it becomes urgent, more than ever, to revisit and relearn Gandhi. So with this, I want to invite our first speaker, Dr. Sapna Samant. Now, please, if you'll introduce yourself and share with us your text. Kia koutou, ko Sapna tōku ingoa. I live in Tamaki Makaurau, Auckland. Thank you, Balamohan. So I'm going to read from one of Gandhiji's books called Pathway to God. And this is chapter 4 on truth. So there's 3 bits of reading that I'm going to do, and I'll just introduce them. Tiny readings, not too long. He asks the question, what is truth? What is truth? A difficult question, but I have solved it for myself by saying that it is what the voice within tells you. How then, you ask? Different people think of different and contrary truths. It is because we have, at the present moment, everybody claiming the right of conscience without going through any discipline whatsoever. There is so much untruth being delivered in a bewildered world. All that I can, in true humility, present to you is that truth is not to be found by anybody who has not got an abundant sense of humility. If you would swim on the bosom of the ocean of truth, you must reduce yourself to a zero. Truth is within ourselves.
There is an inmost center in us all where truth abides in fullness. Every wrongdoer knows within himself that he is doing wrong, for untruth cannot be mistaken for truth. Truth and righteousness must forever remain the law in God's world. The law of truth is merely understood to mean that we must speak the truth. But we understand the word in a much wider sense. There should be truth in thought, truth in speech, and truth in action. And then he talks about, there's a whole lot of other things, but then there's something he says about silence. Silence is a great help to a seeker after truth, like myself. In the attitude of silence, the soul finds the path in clearer light, and what is elusive and deceptive resolves itself into crystal clearness. Now, I'm a student of Vipassana, and this really resonated with me of, being silent and listening to yourself. Then chapter 5 on love, or what he titles Ahimsa. In this, he talks about truth and love. And remember, truth is ahimsa, not the love that you see in the movies. Love and truth are the faces of the same coin, and both very difficult to practice, and the only things worth living for. A person cannot be true if he does not love all God's creatures. Truth and love are therefore the complete sacrifice. Without truth, there is no love. Without truth, it may be affection, as for one country's, to the injury of others, or infatuation as of a young man for a girl. Love transcends all animality and is never partial. True love is boundless like the ocean and swelling within one, spreads itself out and crossing all boundaries and frontiers, envelopes the whole world. Thank you. Beautiful. I think the notion and appeal to truth is so powerful, and especially because the idea of being on the right side or holding true satyagraha is quite a powerful idea in Gandhiji's work. So thank you for sharing that reading. What I'd like to do is invite the people all together at once. And you'll see everybody on the screen, and I'll call out the names of people who'd like to go next. So I invite Vivek Asri, Deepak Joshi, Samir Deshpande Joshi, and Samir Deshpande and Mahbub online. If there's possibility of muting your sound, if you're not the one speaking, that would be really helpful. Wonderful. Great. Now, could I invite Vivek yourself to introduce yourself and also the text that you'd like to read? Thank you so much, Professor Datta and everyone else in the care for giving me this opportunity at such an opportune moment, which is 2nd of October. And it should be the festival of peace and love for everyone who consider himself a human being. So my name is Vivek. I am the editor of NRI Affairs, which is a news portal, community news portal in Australia. And today I would like to read an essay by Dr. Purushottam Agarwal from JNU. The essay is in Hindi, and I hope everyone can understand Hindi here, because it is, the title itself says a lot. It says, मजबूती का नाम महात्मा गांधी. हम बचपन से सुनते आए हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. ये एक कहावत जैसा बन गया था. तो प्रोफेसर अग्रवाल ने बहुत खूबसूरती से लिखा है कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी कैसे है. तो अब मैं पाठ शुरू करता हूं. पहले मैं भी मानता था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है. धीरे धीरे मैंने महसूस किया, और गौर से सोचें तो हम सब महसूस कर सकते हैं कि असल में मजबूरी हिंसा है. हिंसा दृढ़ता और शक्ति को प्रकट नहीं करती. हिंसा मजबूरी को प्रकट करती है.
मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति, विचार या सत्ता के संपर्क में नहीं आया हूं जिसने हिंसा करते हुए ये न कहा हो कि हम तो हिंसा के लिए मजबूर हुए थे। स्टेट हिंसा करता है क्योंकि उसे सिस्टम बनाए रखना है। क्रांतिकारी हिंसा करते हैं क्योंकि स्टेट ने उन्हें विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। अध्यापक हिंसा करते हैं क्योंकि बिना हिंसा और अनुशासन के बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता। बच्चे हिंसा करते हैं क्योंकि हिंसा के बिना समाज सुनने को तैयार नहीं होता। तो इस उलट बांसी को हम सब आत्मसात किए बैठे हैं, और केवल हम ही नहीं, सारी दुनिया आत्मसात किए बैठी है और मानती है कि अहिंसा मजबूरी का प्रमाण है और हिंसा ताकत का। मुझे लगता है बात उल्टी है। असल में स्वयं हिंसा करने वालों पर अगर आप ध्यान दें, चाहे वे सरकारी अफसर के तौर पर हिंसा करते हों, विचार में हिंसा को सही ठहराते हों, स्टेट के रूप में हिंसा करते हों, किसी भी तरह से हिंसा करने वाले पर अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि हर हिंसक व्यक्ति विचार में अपने आप को मजबूर, परिस्थितियों के आगे बेबस के रूप में प्रकट करता है। मुझे इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ, और इस अल्पता के साथ मैं इस यात्रा को आपके सामने बांटना चाहता हूं, जो यात्रा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी से मजबूती का नाम महात्मा गांधी तक की यात्रा है, और ये यात्रा हम सब की हो सकती है। 1989 में मैं अपने दोस्तों के साथ पंजाब गया। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य था गांधी जी से बहुत तुच्छ अपने जीवन में, अपने विचार में बहुत छोटी सी प्रेरणा लेते हुए ये समझने की कोशिश करना कि लोग मरने मारने पर उतारू क्यों हो जाते हैं। इसलिए पंजाब में हम तरह तरह के लोगों से मिले, कम्युनिस्टों से, कांग्रेसियों से, भाजपाइयों से, और उन लोगों से जो स्वतंत्र खालिस्तान के लिए उस वक्त आंदोलन चला रहे थे। दमदमी टकसाल ऐसे लोगों का केंद्र था। जब हम वहां गए, हमें विस्तार से खालिस्तानी आंदोलन के तर्क को समझाने के लिए लंबे लंबे लेक्चर पिलाए गए। हम लोग काफी डरे हुए थे, घबराहट भी थी, लेकिन मेरा एक दोस्त अपनी आदत के मुताबिक बहस पर उतारू हो गया और बहस चल पड़ी। उस बहस के बीच एकाएक उस बैठक में जो सबसे ज्यादा बोलने वाला सिख था, उसने अचानक कहा, वैसे जी एक बात है, अगर गांधी जी होते तो पंगा सुलट जाता। हमें ये बात समझ में नहीं आई। हमने पूछा कि आपके कहने का क्या मतलब है, गांधी जी होते तो पंगा सुलट जाता यानी? उसने कहा, देखो ऐसा है, अगर वो होते तो सारे आतंकवाद और सारी गोलाबारी के बावजूद आते और अमृतसर में भूख हड़ताल पर बैठ जाते। मेरे लिए ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि ये कहने वाला व्यक्ति हिंसा का विरोधी हो गया। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कहने वाला व्यक्ति गांधी मार्ग पर चला गया या गांधीवादी हो गया। लेकिन गांधी की राजनीति, गांधी का सामाजिक जीवन, गांधी का राजनीतिक जीवन उनके घोर विरोधियों के मन में भी कम्युनिकेशन के प्रति, संवाद के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। और ध्यान देने की बात यह है, जिस डर की चर्चा मैं करता रहता हूं, जिस संवाद की संभावना को ही समाप्त कर देने की बात, बातचीत बंद हो जाने की बात, इस पॉसिबिलिटी की बात जब हम करते हैं, उस डर का ये केवल एक अनौपचारिक काम नहीं है। ऐसा भय संवादहीनता को संभव करने वाला भय है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जानबूझकर और प्रयत्न पूर्वक ये डर पैदा किया जाता है। दमदमी टकसाल का जो संस्मरण मैंने सुनाया, उससे ऐसा लग सकता है कि गांधी की महत्ता को केवल उनके आत्म बलिदान से समझा जाता है। ऐसा नहीं है। गांधी की महत्ता उनके आत्म बलिदान में, उनके साहस में निश्चित रूप से है, लेकिन वो महत्ता उससे कहीं आगे जाती है। गांधी की महत्ता, गांधी की इंपॉर्टेंस उनकी उनके विचार में है, उनकी अंतर्दृष्टि में है, उनके विवेक में है। हमें इस बात को समझना चाहिए। मजबूती का नाम महात्मा गांधी, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मजबूत शब्द जब्त से बना है। जब्त यानी धीरज करना, सहन करना, धैर्य के साथ खड़े रहना। मजबूत अनिवार्यतः अग्रेसिव व्यक्ति को नहीं कहते हैं। मजबूत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें धीरज हो, पेशेंस हो, कॉन्शियंस हो। इस अर्थ में गांधी जी की मजबूती इंस्पिरेशनल है और एजुकेशनल भी। हमारा समय क्रूर हिंसा के सिंप्लीफिकेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का समय है। दूसरी चीजों का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ हो या ना हुआ हो, जैसे पावर का, मनी का, उद्योगों का, लेकिन आप अगर अपने आसपास के समाज को देखें तो क्रूरता और हिंसा का एक अभूतपूर्व डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। अब क्रूरता और हिंसा केवल सिस्टम का पार्ट नहीं है। आज के क्रांतिकारी भी केवल सफाया नहीं करते,
विधिवत और व्यवस्थित रूप से टॉर्चर करते हैं। वे केवल क्लास के आधार पर अपने एनिमीज का सफाया नहीं करते, वे स्कूल के बच्चों से भरी हुई बसों को भी बमों से उड़ा सकते हैं। वो मुखबिरों के, जासूसों के हाथ पांव काट कर उन्हें जीवन भर तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं। हिंसा और क्रूरता का ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसा अभूतपूर्व सिंप्लीफिकेशन मार्टिन लूथर किंग की उस प्रसिद्ध वार्निंग की याद दिलाता है। ये एक करुण विडंबना है कि मार्टिन ने जिस भाषण में ये बात कही थी, दरअसल ये उनका लास्ट भाषण था। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, जिस मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं, उस मोड़ पर दुनिया के लिए चुनाव अब नॉन वायलेंस और वायलेंस के बीच में नहीं है। अब चुनाव नॉन वायलेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में है। आप हिंसा और अहिंसा में से किसी एक को नहीं चुन सकते। आपको अहिंसा और सर्वनाश के बीच में से किसी एक को चुनना है। गांधी जी ये बात बार बार कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, सत्य और अहिंसा तो शाश्वत है। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज हिल्स, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। और उनका कहना कि अहिंसा का विचार शाश्वत है और कुछ नया नहीं है, दरअसल सच नहीं है। ये गांधी जी की विनम्रता है और इसे शब्दशः नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने जिस सेंस में, जिस अर्थ में अहिंसा का प्रयोग किया है, नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया है, वो एकदम ओरिजिनल है, मौलिक है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि संसार के सभी धर्मों में अहिंसा अंततः एक आइडियल है, जिसे पाने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए, और जिसको न पाने की स्थिति को जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, आपके पास हमेशा रहेगा। गांधी जी के लिए लेकिन अहिंसा, नॉन वायलेंस केवल आइडियल नहीं है। उनके लिए और उनकी अहिंसा पारंपरिक, जो ट्रेडिशनल नॉन वायलेंस है, जो धर्म के जरिए प्रसारित की जाती है, उससे आगे की चीज है। संसार का हर धर्म पवित्र और अपवित्र हिंसा के बीच में अंतर करता है। संसार का हर धर्म वध और हत्या के बीच में अंतर करता है। हत्या यानी मर्डर अस्वीकार्य है, वध न केवल स्वीकार्य है बल्कि कई स्थितियों में अलाउड है। आप गोडसे के बयान का अर्थ समझिए। गोडसे जब भी हिंदी या मराठी में बोलता था, कभी वो हत्या शब्द का प्रयोग नहीं करता था। गोपाल गोडसे की पुस्तक का शीर्षक ही है गांधी वध अणि मैं, यानी गांधी का वध क्यों किया। वध नैतिक रूप से स्वीकृत, नैतिक रूप से मान्य एक इच्छा है, जो यह कहा जा सकता है कि कई बार ये जरूरी हो जाता है। इसलिए अहिंसा वहां तक ठीक है जहां तक कि हमारे विचारों, हमारी अवधारणाओं, हमारी आस्थाओं के अनुकूल है। अहिंसा अपने आप में कसौटी नहीं है, बल्कि अहिंसा एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी मान्यता है जिसे हम आस्था की कसौटी पर कसते हैं। लेकिन गांधी के साथ ऐसा नहीं है। एक चुटकुला मेरे दोस्त सुनाया करते थे। वो एक थानेदार साहब एक कोर्ट में पहुंचे एक चोर को लेकर, और उन्होंने मैजिस्ट्रेट को कहा कि साहब मैंने इस चोर को पकड़ा है। अब उस चोर को देखकर जज को हंसी आ गई। वो चोर जो था एकदम छरहरा फुर्तीला, और थानेदार साहब यानी पुलिस इंस्पेक्टर साहब वो मोटे थुल जिनसे चला ना जाए। मैजिस्ट्रेट ने कहा, आपने पकड़ा है, अगर ये भागने भी लगे तो आप छू नहीं पाएंगे, आपने कैसे पकड़ लिया। थानेदार ने कहा, साहब हुकूमत दौड़ कर नहीं चलती है, इकबाल से चलती है। मैंने एक बार कह दिया, खबरदार खड़े रहना, हिलना नहीं, इसकी मजाल थी कि हिल जाता। ये हिंसा का एक रूप है। संगठित हिंसा असल में इकबाल का मामला है। हिंसा की सजेस्टिव पावर इंपॉर्टेंट होती है। और गांधी जी की मजबूती की बात जब हम करते हैं तो बहुत सीधी सी बात हमारे सामने है। गांधी जी की लाखों विफलताओं की चर्चा की जा सकती है। गांधी जी के बहुत सारे काम विवादास्पद रहे होंगे। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में विवाद होना स्वाभाविक है। लेकिन इस बात से तो कोई गांधी जी का घोर विरोधी, घोर आलोचक भी इनकार नहीं करेगा कि गांधी ने इंपीरियल पावर की, हिंसा की सजेस्टिव ताकत को, उसके इकबाल को तोड़ दिया था। उन्होंने बारंबार दो बातों को साफ किया है। एक ये कि अहिंसा और कायरता, कावर्डिस, पर्यायवाची नहीं है। कायरता की मूल प्रेरणा वस्तुतः वही है जो हिंसा की मूल प्रेरणा है। आक्रामकता किसी भी कीमत पर अपने आप को बचाए रखने की प्रेरणा से पैदा होती है, और इसी प्रेरणा से कावर्डिस पैदा होती है।
जब आप दूसरे को ध्वस्त करके, दूसरे को तोड़ के, दूसरे को मार कर अपने आप को बचा नहीं सकते, तो भाग कर अपने आप को बचा ले। हिंसा इस अर्थ में कायरता है। हिंसा और कायरता परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं, कंपैटिबल हैं एक दूसरे के। और गांधी जी इस बात को बहुत गहरे से समझते थे। गांधी की इंपॉर्टेंस ही इस बात में है, गांधी की रेलेवेंस ही इस बात में है कि सारी चीजें जो अधिक से अधिक इंडिविजुअल आइडियल के रूप में सोसाइटी से दूर जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं उनके पास थी, गांधी जी ने उन सब चीजों को एक एक समाज के पास लाकर खड़ा कर दिया, एक इंडिविजुअल के पास लाकर खड़ा कर दिया। ये गांधी की ही ताकत थी कि करोड़ों लोगों को, दरअसल 30 करोड़ लोगों को ये कहना कि कोई हिंसा नहीं करेगा लेकिन बंदूक के सामने खड़ा रहेगा। करोड़ों लोगों को उन्होंने इस तरह तैयार किया और ये उनकी अहिंसा की मौलिकता है, उसकी ओरिजिनलिटी है। इसीलिए गांधी जी की अहिंसा जो ट्रेडिशनल अहिंसा है, जो रिलीजियस अहिंसा है, जो रिलीजियस नॉन वायलेंस है, वो नहीं है, उससे आगे की बात है। वो बुनियादी तौर पर टिकी हुई है करुणा और संयम पर। गांधी जी के सारे जीवन को किताब की तरह पढ़ें। आजकल प्रचलित फैशनेबल शब्दावली के मुहावरे में कहें तो एक टेक्स्ट की तरह पढ़ें, तो उसका जो सब टेक्स्ट है वो यही है, करुणा और संयम। गांधी जी का जीवन सफल हो या असफल, उस पर फैसला देने का अधिकार कम से कम हम जैसे लोगों को नहीं है, बड़े बड़े इतिहासकारों को है, विचारकों को है। लेकिन गांधी जी के जीवन का एक बहुत ही सार्थक अर्थ है, एक तरह की मोरल डाइकोटमी है कि उसके पार जाने का, और इस अर्थ में वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं और एक चैलेंज भी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये माने कि गांधी नहीं हो सकता। मैं कम से कम इतना तो मान सकता हूं कि किसी भी दूसरे मनुष्य की तरह मेरे भीतर, मेरे अंदर एक गांधी है और एक गोडसे। और मेरा कॉन्टिन्यूअस चैलेंज ये है कि मुझे सही सिलेक्शन करना है, सही जगह खड़े होना है। गांधी जी के शब्दों में सत्य का आग्रह मेरा चैलेंज है। गांधी जी ने सत्याग्रह को परिभाषित किया था। सत्याग्रह का मतलब ही है अपने घोर विपक्षी के सत्य में भी, उसकी संभावना में भी आस्था रखना। इस बात में आस्था रखना कि किन्हीं कारणों से कोई मनुष्य कितना भी पतित क्यों ना हो गया हो, अंततः घोर पतित, घोर पापी, घोर हिंसक मनुष्य भी, और जब तक उसकी मनुष्यता है तब तक उसके अच्छा होने की संभावना है। उस निपट मानव को, जैनेन्द्र के शब्दों में, उस निपट मानव को अपने भीतर खोजना, उस मजबूती को अपने भीतर खोजना गांधी है। वो मजबूती जो हमें इस बात की लगातार याद दिलाए, और यदि हम उसको सुन ना पाए तो गांधीवादी मुहावरे में कहें तो परमात्मा की आवाज जो मेरे, आपके, सबके मन में कहीं ना कहीं है, बिना संयम और करुणा के नहीं हो सकती। यानी बिना संयम और करुणा के मैं मनुष्य नहीं हो सकता। वो आवाज हम सब के भीतर है, हम सबको प्रेरित करती है, मजबूर करती है, विवश करती है कि हम सही वक्त पर सही फैसला करें। हम कर नहीं पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, और उस पॉसिबिलिटी का नाम ही मजबूती है। वो मजबूती जो गांधी है, उस पॉसिबिलिटी का नाम ही गांधी है। इसलिए मजबूरी का नाम गांधी नहीं है, मजबूती का नाम गांधी है। थैंक यू वेरी मच। How beautiful, Vivekji. Thank you so much for sharing that. And thank you for sharing it in Hindi as well. It's so incredible to hear you speak and to be reminded of the possibility of Gandhi. To emphasize possibility is really powerful. I'd like to invite Harunji next to go and introduce yourself. It's lovely to see all your faces. And then share with us what you'll be reading. So over to you. Thanks, Bala. Look, my name is Harun. I'm a doctor here in Australia, and I've had the privilege of being here thanks to Mohan, with whom we've been working closely on a few issues that's happening in the Indian diaspora. And I think Gandhi's birthday today and what I'm going to read has relevance to that. And that is about, Hindu, Muslim syncretism, right? So I'm going to read from a few pages from Hind Swaraj, which was
a book authored by Mohandas Gandhi, and in the book, Gandhiji plays the role of the editor, and he responds to questions by the reader, who was one Dr. Prani Jeevan Mehta. The reader voices common beliefs and arguments that are made to this day, especially in the context of Hindutva. And Gandhi explains why those arguments are flawed, and he says, look, it is my duty to patiently to remove your prejudice. So this is about removing prejudice, and I don't know how much time I have, but I'll read a few questions. And then we'll take it from here. I certainly won't be as powerful as Vivek Ji was. It was just a tour de force, but I'll give it a go. So I'm reading from chapter 10, Condition of India. And this is about Hindus and Mohammedans, who were Muslims were called Mohammedans then. And Gandhi, being the editor, answers, the reader asks Gandhi the question, I am impatient to hear your answer to my question. Has the introduction of Mohammedanism, which is Islam really, not unmade the nation? And that's just, that has strong resonances to what's being asked today. And Gandhi, in his role as an editor, says India cannot cease to be one nation because people belonging to different religions live in it. The introduction of foreigners does not necessarily destroy the nation. A country is one nation only when such a condition obtains in it. The country must have a faculty of assimilation. For assimilation, India has ever been such a country. In reality, there are as many religions as there are individuals. With but those who are conscious of the spirit of nationality do not interfere in one another's religion. If they do, they're not fit to be considered a nation. If Hindus believe that India should be peopled only by Hindus, they are living in a dreamland. The Hindus, the Mohammedans, the Parsis, and the Christians who have made India the country are fellow countrymen, and they will have to live in unity, if only for their own interest. In no part of the world are one nationality and one religion synonymous terms, nor has it ever been so in India. So the reader goes on to ask the next question, again, which is asked today, is what about the inborn enmity between Hindus and Muslims? I find it amusing because I didn't know that you could have genetic mutations that cause inborn enmity. But anyway, Gandhi goes on in his role as an editor again, goes to, address those prejudices that happen as of today, so it's very relevant. And he says the phrase has been invented by our mutual enemy. I think he was referring to English, who were trying to create those divisions. When the Hindus and Mohammedans fought against one another, they spoke in that strain. They have long since ceased to fight. How then can be there any inborn enmity? Pray remember this too, that we did not cease to fight only after the British occupation. The Hindus flourished under Muslim sovereigns and Muslims under the Hindu. Each party recognized that mutual fighting was suicidal, and neither party would abandon its religion by force of arms. Both parties, therefore, decided to live in peace. With the English advent, quarrels are recommenced. The proverbs you have quoted were coined when both were fighting. To quote them now is obviously harmful. Should we not remember that many Hindus and Mohammedans own the same ancestors and the same blood runs through their veins? Do people become enemies because they change religion? Is God of the Mohammedan different from the God of the Hindu? Religions are different roads converging to the same point. Wherein is the cause for quarreling? Moreover, there are deadly proverbs as between followers of Shiva and those of Vishnu, yet nobody suggests that they do not belong to the same nation. It is said that Vedic religion is different from Jainism, but the followers of the respective faiths are not different nations.
The fact is, we have become enslaved and therefore quarreled and like to have our quarrels decided by a third party. There are Hindu iconoclasts as there are Mohammedan. The more we advance in true knowledge, the better we shall understand that we need not be at war with those whose religion we may not follow. And then he goes on to another very topical question. Now, I would like to know your views on cow protection. This is because a lot of Muslims have been lynched because of the cow protection laws in India. And so again, Gandhi, as an editor, intercedes and tries to address those prejudices. And he says, I myself respect the cow. That is, I look upon her with affectionate reverence. The cow is the protector of India because, being an agricultural country, she is dependent on the cow. The cow is the most useful animal in hundreds of ways. Our Mohammedan brethren will admit this. But just as I respect the cow, so do I respect my fellow men. As man is just as useful as the cow, no matter whether it be Mohammedan or Hindu. Am I then to fight with or kill a Mohammedan in order to save a cow? In doing so, I would become the enemy of the Mohammedan as well as of the cow. Therefore, the only method I know of protecting the cow is that I should approach my Mohammedan brother and urge him for the sake of the country to join me in protecting her. If he would not listen to me, I should let the cow go for the simple reason that the matter is beyond my ability. If I were full of pity for the cow, I should sacrifice my life to save her, but not take my brother's. This I hold is the law of our religion. When men become obstinate, it is a difficult thing. If I pull one way, my brethren will pull the other. My Muslim brother will pull another. If I put on superior airs, he will return the compliment. If I bow to him gently, he will do he will do it much more so and return the compliment. Sorry, and return the comp. And if he does not, I shall not be considered to have done wrong in having bowed. When Hindus become insistent, the killing of cows increased. It is a disgrace to us, and we should need such societies. When we forget how to protect cows, I suppose we sorry. When we forget how to protect cows, I suppose we need. We need such societies. What am I to do when a blood brother is on the point of killing a cow? Am I to kill him or to fall down at his feet and implore him? If you admit that I should adopt the later course, I must do the same to my Muslim brother. Who protects the cow from destruction by Hindus when they cruelly ill-treat her? Whoever reasons with Hindus when they mercilessly belabor the progeny of the cow with their sticks? But this has not prevented us from being one nation. Lastly, if it be true that Hindus believe in the doctrine of non-killing and Mohammedans do not, what, pray, is the duty of the former? It is not written that a follower of religion of ahimsa may kill a fellow man. For him, the way is straight. In order to save one being, he may not kill another. He can only plead, therein lies his sole duty. But does every Hindu believe in ahimsa? Going to the root of the matter, not one man really practices such a religion because we do destroy life. We are said to follow that religion because we want to obtain freedom from liability to kill any kind of life. Generally speaking, we may observe that Hindus partake of meat and are not, therefore followers of ahimsa. It is therefore preposterous to suggest that the two cannot live together amicably because the Hindus believe in ahimsa and the Mohammedans do not. These thoughts are put into our minds by selfish and false religious teachers. The English put the finishing touch. They have a habit of writing history. They pretend to study the manners and customs of all peoples. God has given us limited mental capacity.
but they usurp the function of the Godhead and indulge in novel experiments. They write about their own researches in most laudatory terms and hypnotize us for believing them. We, in our ignorance, then fall at their feet. Those who do not wish to misunderstand things may read up the Quran, and they will find therein hundreds of passages acceptable to Hindus, and the Bhagavad Gita contains passages to which a Mohammedan cannot take exception. Am I to dislike the Mohammedan because there are passages in the Quran that I do not understand or like? It takes two to make a quarrel. If I do not want to quarrel with the Mohammedan, the latter will be powerless to foist a quarrel on me. And similarly, I should be powerless if a Mohammedan refuses his assistance to quarrel with me. An arm striking the air will become disjointed. If everyone will try to understand the core of his religion and adhere to it, and will not allow false teachers to dictate to him, there will be no room left for quarreling. I have one more question. Should I go ahead or maybe? Okay, I will. So the last question is the reader is asked, but would the English ever allow the two bodies to join hands? Or shall I skip this? I think I've just run out of time. Thank you. Do I just leave? Yeah. No, you can go ahead if you'd like to read that last passage, but otherwise... Yeah. I just had to jump onto another small Okay, comment. sure. Hey, thank you so much, Harunji. What was really wonderful about the passages you shared, that it actually speaks to the reality of syncretism in India, and also as it is shown in the diaspora here in Aotearoa, where we have such a diversity of South Asian representation in our community. So speaking to that was really wonderful. Thank you for sharing those passages. Thank you. Thank you. I'd like to invite Deepak Ji to go next. If you'd like to introduce yourself and perhaps a little bit about what you'd like to read. Over to you. Yeah. Thank you, Bal Mohan, and thank you, Professor Mohan Datta, for this opportunity. I am from Melbourne, and I am a businessman by profession, but also the co-founder of the Humanism Project, which is a social justice advocacy group of the Indian diaspora in Australia. I'm also the co-founder of NRI Affairs, like Vivek, which is a digital media channel for the Indian diaspora. So do check it out on Facebook, Twitter, YouTube, NRI Affairs, nriaffairs.com. That is our website. So thank you for the opportunity. I will be reading a passage, a post by my friend and social activist Himanshu Kumar, who has written something in very simple words. He has explained what Mahatma Gandhi's contribution to India was, or India's freedom struggle was, because many, according to him, still question his contribution, especially those who have made little or no effort to understand Gandhi, and perhaps not made any contribution to India's freedom struggle either. This is in Hindi, so my apologies to those who do not understand Hindi. So here it goes. क्या आजादी गांधी ने दिलवाई? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है. सवाल पूछने वाला ज्यादातर मामलों में जवाब अपनी जेब में लिए घूमता है. वो कहता है आजादी तो फला फला की वजह से मिली. तो आइए बिना किसी भक्ति भाव के गांधी की स्टाइल, चालाकी और स्वैग की बात करते हैं. अंग्रेज खुद को बहुत होशियार समझते थे. वे समझते थे कि वो हर चाल को गांधी के समझ जाएंगे, लेकिन गांधी की हर चाल अंग्रेजों की बुद्धि को चकरा देती थी. और मजे की बात यह है कि गांधी अपने हर अगले कदम की सूचना अपने विरोधी को सबसे पहले दे देते थे, लेकिन विरोधी तो सबसे पहले ही चित हुआ पड़ता था. अंग्रेज भारत में कच्चा माल हड़पने और अपना तैयार माल बेचने के लिए कब्जा किए बैठे थे.
गांधी ने इस चाल की काट क्या की? गांधी ने कहा, हम अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम इसे जलाएंगे। लोगों ने कहा, जलाते नहीं, किसी को दे देते हैं। लेकिन गांधी को पता था कि अंग्रेज कपड़ा रहा तो खादी के कपड़े की मांग नहीं पैदा होगी। गांधी स्वदेशी माल बेचना चाहते थे और अंग्रेजों के मंसूबों पर मिट्टी मिलाना चाहते थे। गांधी को कौन सा माल बिकवाना था? गांधी ने अंग्रेजों के भारत आने की वजह समझ ली थी और उनकी काट यह थी कि भारत अंग्रेजी औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ खड़ा हो जाए। लेकिन औद्योगिकरण की काट तो अपने उद्योग ही कर सकते थे और भारत में उद्योग थे नहीं। उद्योग के लिए चाहिए थी पूंजी, मशीन, कच्चा माल, स्किल्ड लेबर और बाजार। गांधी ने कहा, अंग्रेजों की लंकाशायर की मिल के मुकाबले होगा हमारा 50 पैसे का चरखा। तो पूंजी का इंतजाम हो गया। फिर गांधी ने कहा, कपास उगाओ, यानी कि कॉटन। कच्चे माल का इंतजाम भी हो गया। उसके बाद गांधी ने कहा, भारत का जो भी नागरिक अंग्रेजों से छुटकारा चाहता है वो चरखा चलाए और खादी पहने। आसाम से लेकर उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कश्मीर या भारत के कोई भी राज्य में चले जाइए, लोग बताएंगे कि गांधी जी के कहने पर हमारी दादी ने चरखा चलाया और शायद जेल भी गई। गांधी ने चरखे जैसी 8 आने की चीज को अंग्रेजों के विरोध का प्रतीक बना दिया और जेल जाने को शान की चीज बना दिया और गोली खाने को वीरता बना दिया। करोड़ों लोगों के सीने अंग्रेजों की बंदूकों के सामने खुलवा दिए गांधी ने। करोड़ों बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, युवक, युवतियां और बच्चे तक बंदूकों और जेल के सामने निडरता से खड़े होकर कर दिए उस बूढ़े ने। लेकिन वो खाली उपदेश देने वाला धर्मगुरु नहीं था, उसने खुद लाठियां खाई, जेल गया और बंदूकों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। दलितों के समान अधिकारों के लिए अहमदाबाद के महंत से मार भी खाई। गांधी ने दुनिया को ऐसी चीजें दी जो दुनिया पहले नहीं जानती थी, और वो है राजनैतिक सत्याग्रह और जन आंदोलन। जब क्यूबा से चे गुवेरा भारत आए तो उन्होंने कहा, हमें तो पता ही नहीं था कि आजादी की लड़ाई ऐसे लड़ी जा सकती है। अगर हमें पता होता तो हम बंदूक क्यों उठाते? थैंक यू। Wonderful. Thank you so much. I love the idea of this swag of Gandhiji. That idea is beautiful. And to recall how the wheel became such an important tool for the anti-colonial movement. So it's really beautiful that you shared that. Can I call next upon Samirji, if you'd like to introduce yourself and the text that you're reading? Over to you. Yeah, thank you very much. I'm joining from Brisbane in Australia. Actually, I got this information pretty late, so I'm outside right now, sitting next to the Brisbane River. So anyway, I'm still very excited to join you guys. The text I wanted to read, and I'm not going to read the whole poem, but it is a 13th century Santa Jnaneshwar's poem called Pasaidan. I'm a Maharashtrian from Mumbai. So in Maharashtra, this poem and the influence of Sant Jnaneshwar is immense, considered to be one of the earliest reformers of various social issues in the state. So what he did was during his lifetime, he was a devotee of Lord Krishna, and he was a big believer in Bhagavad Gita. So what he did was he translated Gita for the common man. He translated from Sanskrit to Marathi. And so that book called Jnaneshwari has become a folklore in the state, and people read it even today. There are a lot of kirtans, bhajans that take place trying to speak out the lessons from that. Particularly, it's quite a big book to read, but particularly the last, the poem that is in the end of the book, almost like an epilogue,
called Pasaidan has become a very important text for Maharashtrians, if not for the world. And interestingly, it became very popular recently because Amir Khan talked about it a few years ago in Aapki Adalat, television program, and suddenly it had a different level of popularity. So I thought I will just read the first three couplets of Pasaidan, and which is in Marathi. It's actually an old Marathi style. Even for me, it becomes a bit difficult to understand it. But of course, I know because I have read about it quite a few times. So I will read the first three couplets, and then I will explain why I thought this was relevant to today's event. I don't have my glasses with me, so I'm going to make the most I can by reading from the website. So this is how it goes. Ata Vishwatmake Deve Yene Vagyadne Toshave Toshoni Mazad Dyave Pasai Dan Hai Je Kharanchi Venkati Sando Taya Satkarmi Rati Vadho Bhutan Paraspare Pado Mitra Jivache दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात. So these are the first three couplets of his poem, and I'll tell you why it is so. First of all, it is according to him, this is a summary of Bhagavad Gita in one poem, and also a summary of Jnaneshwari in just 9 couplets. So he has 9,000 verses in that book where he summarizes in 9 couplets. This is a poem where he is asking the God, a universal God, for universal peace. Yeah. And so he's not talking about benefit for himself. He's not asking for benefit for any community. He's saying everyone, humans, animals, everyone should be given the blessing of the universal energy. But the couplet number 2 and 3 are particularly important and are spoken about the most in that poem, because, and Mohan will find it very relevant, because the couplet actually says that my first blessing is for those who hate me. My first blessing is for those who have evil thoughts in them and have evil karma in their life. I don't want them to die. I don't want anything wrong to go with them. I ask you, God, the universal God, to actually just take away the evilness from them and just take away the darkness from them. So he's not asking for, even Krishna actually in Gita talks about killing the evil people. Jnaneshwar, his disciple, is not asking for removing the killing the evil people. He's asking for removal of the evilness from the people, which was considered to be quite revolutionary at that time, and I think it still is. And then in the third couplet, he talks about how do you do that? And of course, it's all open to interpretation, and people have interpreted in many, many ways, as you can imagine. The way I interpret, of course, biased by my own understanding of spirituality, I think he's talking, literally speaking, he's talking about sun rays. He's saying, as soon as there are sun rays, the morning comes, the darkness will go away, and that's how the evil people will stop being evil, and contribute to the welfare of the society. So what is what is morning? What are sun rays? I guess it is, as Advait philosophy talks about, awareness. Understand who you are, understand your dharma, understand your karma, and eventually realize that your actions are causing grief to others. I think it's time that I acknowledge that, stop denying it, and actually be part of what is important and useful for the society, which of course I interpret as being at peace, accepting the otherness as my own, and be a part of contributing to the welfare. So that's all I wanted to say, and yeah, I can stop here.
How beautiful. Thanks for being patient while we came back online. But that was so powerful. The Thank you. as my last name gives away, my father's side of the family is also Marathi. And the bhajans, the abhang that are composed by Jnaneshwar are just so powerful in speaking to this idea of love and compassion. That was really a great reminder. And also this really powerful idea of attending to the other that is in us, the idea of otherness. It's great to be reminded. For the next reading, can I invite Mahabubji? And please introduce yourself and share what you'd like to read tonight. Good afternoon. This is MD Mahabubur Rahman. I am doing my PhD on communication and journalism at Massey University, New Zealand. I am now from the city Palmerston North, New Zealand. I will read an article in Bangla. I am originally from Bangladesh, so I will read the article in Bangla. The article was published by BBC in 2019 on the birth anniversary of Gandhiji. The title of the article is Gandhi, বিদ্রোহী কিশোর থেকে ভারতের জাতির জনক. That is, Gandhi from rebel teenager to the father of the nation of India. Again, I mention the title, Gandhi, বিদ্রোহী কিশোর থেকে ভারতের জাতির জনক. 1940 সাল, প্রতাপশালী এক সাম্রাজ্য পরাজিত হয়েছিল সাদা সিধে পোশাকের এক ব্যক্তির কাছে. তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যিনি মহাত্মা গান্ধী হিসেবেই বেশি পরিচিত. মহাত্মা, যার অর্থ হচ্ছে মহান আত্মা, দ্য গ্রেট সোল. সেই সময় ভারত ছিল ব্রিটিশ শাসনের অধীনে. পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ তখন ব্রিটিশদের উপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল. একজন প্রজ্ঞার অধিকারী রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে গান্ধী ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা এবং গরিব মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন. তার অহিংস বিক্ষোভের উদাহরণ আজকের দিনে এখনো বিশ্বজুড়ে সমাদৃত. তার জন্মবার্ষিকীতে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময়ের দিকে ফিরে তাকাবো আমরা. অভিজাত পরিমণ্ডলে জন্ম. 1869 সালে 2 অক্টোবর ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজকীয় প্রাদেশিক এলাকা পোরবন্দরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম. তার অভিজাত পারিবারিক ঐতিহ্য রয়েছে. তার বাবা ছিলেন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী. তার মা ছিলেন একজন অত্যন্ত ধার্মিক মহিলা, যিনি পুত্রের মধ্যে দৃঢ় হিন্দু নৈতিকতার সঞ্চার করেছিলেন. নিরামিষ ভোজন, ধর্মীয় সহনশীলতা, সহজ সাধারণ জীবনযাপন এবং অহিংসার উপর জোর দিয়েছিলেন তিনি. বাবার মৃত্যু শয্যায় অনুপস্থিতি. গান্ধীর বয়স যখন 13 বছর, তখন তার বিয়ে হয় 14 বছর বয়সী স্থানীয় এক কিশোরী কস্তুরবার সাথে. টিন এজার গান্ধী তার পরিবারের কঠোর ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন. তিনি মাংস খাওয়া শুরু করেন. এমনকি তিনি পতিতালয়েও যেতেন, যদিও গান্ধী বলেছেন যে তিনি কখনো সেখানে কোনো ধরনের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেননি. পরে তিনি লেখেন, আমি পাপের গহ্বরে ঢুকে পড়েছিলাম, কিন্তু ঈশ্বর তার অসীম করুণায় আমাকে আমার নিজেরই কাছ থেকে রক্ষা করেছেন. তবুও তিনি প্রতিটি অনৈতিক কাজের জন্য পরে অনুতপ্ত হতেন. যখন তার বাবা মৃত্যুশয্যায়, সে সময় গান্ধী তার স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন এবং বাবার মৃত্যুর মুহূর্তে কাছে থাকতে পারেননি. এই গ্লানি তাকে তাড়া করেছে সব সময়. নিজের জীবনীতেও গান্ধী লিখেছেন, এই বিষয়টি তাকে কতটা অপরাধবোধে আক্রান্ত করেছে. তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত বোধ করছিলাম. আমি দৌড়ে বাবার ঘরে ছুটে গেলাম. দেখলাম, যদি পাশবিক প্রবৃত্তি আমাকে অন্ধ করে না রাখতো, তাহলে বাবা আমার নিজের হাতের ওপরই মারা যেতেন. যখন স্ত্রী গর্ভবতী হলেন এবং জন্মের পরপরই তাদের সন্তানের মৃত্যু হয়, গান্ধী এটাকে মনে করলেন তার ওই অনুপস্থিতির ঐশ্বরিক শাস্তি হিসাবে. ব্রহ্মচর্যব্রত. লন্ডনে আইনের ছাত্র হিসেবে অবস্থানকালে গান্ধী থিওসফিক্যাল সোসাইটির সদস্যদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পান. তারা গান্ধীকে উৎসাহিত করেন আরও নিবিড়ভাবে হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ এবং বিশেষ করে ভগবদ গীতা পাঠে.
ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহ তার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বলে পরবর্তীতে তিনি বর্ণনা করেছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি তার ভক্তি বেড়ে যায় এবং তিনি আরো গভীরভাবে অন্যান্য ধর্ম পাঠ করতে মনোযোগ দিলেন। বিশেষত জেসাস সারমন অন দ্য মাউন্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। তিনি লিউ টলস্টয়ের দ্বারাও দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এইসব অভিজ্ঞতা তাকে শৈশবের প্রথাগত হিন্দু রীতিনীতিতে ফিরে যেতে সহায়তা করেছিল, যার মধ্যে ছিল নিরামিষ ভোজন, মদ্যপানে অনাসক্তি এবং যৌন সংসর্গ ত্যাগ। 4 সন্তানের পিতা গান্ধী পরে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করেন এবং পরিধান করতে শুরু করেন ঐতিহ্যবাহী ধুতি, যাকে তিনি বলতেন তার শোকের পোশাক। দক্ষিণ আফ্রিকায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই। লন্ডন থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার পরে গান্ধী ভারতে ফিরে আসেন একজন আইনজীবী হিসাবে কাজ করার জন্য। প্রথম মামলাটি তিনি হেরে যান। ব্রিটিশ একজন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তাকে বের করে দেয়া হয়। অপমানিত গান্ধী এ সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি কাজের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং 1893 সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে ভারত ছাড়েন। পরবর্তী 21 বছর তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতেই কাটান। দক্ষিণ আফ্রিকাতে অবস্থানের সময় ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে তাকে বের করে দেয়া হয়, যার একমাত্র কারণ ছিল তার গায়ের রং। ভারতীয় অভিবাসীদের প্রতি এই ধরনের আচরণ তাকে হতবাক ও ক্ষুব্ধ করে। তিনি সেখানে নিপীড়ন বন্ধের লড়াই ও আত্মশুদ্ধির ধারণা এবং অহিংস আন্দোলন সত্যাগ্রহের বিকাশের জন্য ইন্ডিয়ান কংগ্রেস অফ নাটাল প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় লোকজনের উপর কর আরোপের প্রতিবাদে ধর্মঘট এবং মিছিল করার কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু ব্রিটিশরা ওই ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল এবং গান্ধীকে মুক্তি দিয়েছিল। তার এই বিজয় অর্জনের খবর লন্ডনে ছড়িয়ে পড়ে এবং গান্ধী একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করেন। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত গান্ধী ভারতে ফিরে এলেন এবং শিখদের তীর্থস্থান অমৃতসরে এক গণহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করলেন। অমৃতসরে বিক্ষোভে ব্রিটিশদের গুলিতে প্রায় 400 মানুষ প্রাণ হারায় আর আহত হয় প্রায় 1300। তার অহিংস আন্দোলন, বিক্ষোভের ডাক সব শ্রেণী এবং ধর্মের মানুষের দ্বারা সাদরে সমাদৃত হয়েছিল। তিনি ব্রিটিশ শাসকদের সাথে অসহযোগিতার ডাক দেন, যার সাথে সাথে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনেরও কর্মসূচি ছিল। এর জবাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গান্ধীকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে এবং 2 বছরের জন্য তাকে কারান্তরীণ করা হয়। বিতর্কিত রাষ্ট্রদ্রোহ আইনটি এর আগে 1870 সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তন করা হয় ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে। গান্ধী বলেছিলেন, ওই আইনটির প্রণয়ন করা হয়েছে নাগরিকদের মুক্তি হরণের জন্য। আইনটি এখনো ভারতের পেনাল কোডের অন্তর্ভুক্ত আছে এবং বিভিন্ন সরকারের দ্বারা শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সামাজিক মানবাধিকার কর্মী এবং সরকারের সমালোচকদের বিরুদ্ধে আইনটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ব্যর্থ আলোচনা। 1931 সালে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নিতে লন্ডন সফরে যান মহাত্মা গান্ধী। তিনি ঐতিহ্যবাহী ভারতের পোশাক ধুতি পরে সে বৈঠকে যোগ দেন এবং তার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তুলে ধরেন, কিন্তু আলোচনাটি 62 বছর বয়সী গান্ধীর জন্য ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা তখনও ভারতের স্বাধীনতার দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। অনেক মুসলিম, শিখ এবং অন্যান্য প্রতিনিধিরা গান্ধীর ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের আদর্শের সমর্থন করতে পারছিলেন না এবং তারা বিশ্বাস করতেন না যে গান্ধী সমস্ত ভারতীয়র জন্য কথা বলছেন। এই ঘটনার পর গান্ধী কংগ্রেস পার্টি এবং রাজনীতি থেকে এক পা সরে গেলেন, কিন্তু তিনি দলিত সম্প্রদায়ের যাদেরকে সমাজে মনে করা হতো অচ্ছুত শ্রেণীর, তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখলেন। এরপরও সাধারণ মানুষকে তার একত্রিত করার ক্ষমতা এবং অবিচল ও শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে তার ছোট ছোট বিরোধিতা ধীরে ধীরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে আলোচনায় আসতে বাধ্য করেছিল। প্রতাপশালী এক সাম্রাজ্যের পতন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করে দেওয়ার সাথে সাথে গান্ধীর আন্দোলনের লক্ষ্যগুলো বাস্তব হয়ে ওঠে। 1947 সালে তার প্রিয়তম দেশে স্বাধীনতা আসে, কিন্তু তার যে আশা ছিল, অর্থাৎ হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায় একটি রাষ্ট্রে একত্রে বাস করতে পারবে, সেই আশা সহসাই মিলিয়ে গেল যখন দেশটি 2 ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, অর্থাৎ ভারত আর পাকিস্তান। এই বিভাজন তৈরি করলো আরো বেশি সহিংসতা।
যে সমস্ত মুসলমানরা ভারতে থাকতে আগ্রহী তাদের নিরাপত্তার জন্য গান্ধী দিল্লি ফিরে গেলেন এবং মুসলমানদের অধিকারের জন্য অনশন শুরু করলেন। স্বাধীনতার 6 মাসেরও কম সময় পরে একটি প্রার্থনা সভায় যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন গান্ধী। এমন সময় নাথুরাম গডসে নামে এক কট্টর হিন্দু ধর্মানুসারীর ছোড়া গুলিতে তিনি বিদ্ধ হন। মুসলিম সম্প্রদায় এবং পাকিস্তানের প্রতি তার বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের কারণে ওই হামলাকারী ক্ষুব্ধ ছিল বলে জানা যায়। শান্তির জন্য বিশ্বজুড়ে সুবিদিত এক ব্যক্তিত্বের প্রয়াণে সারা বিশ্ব থেকে মানুষ তখন সমবেত হন শোক প্রকাশের জন্য। গান্ধী ধর্ম, বর্ণ এবং শ্রেণী বিভক্তিহীন এক ভারতের স্বপ্নই দেখেছিলেন, যা তিনি কখনো বাস্তবে দেখে যেতে পারেননি। This all about the article in Bangla. Then I like to say something more. In October 2nd is the 152nd birth anniversary of Karamchand Gandhi. Mahatma means great soul. It is commonly believed that the title Mahatma was bestowed upon Gandhi by India's first Nobel laureate, Gurudev Rabindranath Tagore, a Bengali poet. But the Gujarat government has disputed this, claiming instead that this title Mahatma was given by a local journalist from Saurashtra. However, the great leader is also commonly referred to as Bapu, means father. Mahatma Gandhi was a lawyer and a freedom fighter, but above all, he was one of the world's most peaceful men. He fought the entire fight for freedom without ever fighting, without any violence. His ideals of ahimsa, non-violence, and truth played a pivotal role in not just the Indian freedom struggle, but also inspired leaders across the world. On June 15, 2007, the United Nations General Assembly adopted a resolution that declared October 2nd, the birthday of Mahatma, as International Day of Non-Violence. So today is the International Day of Non-Violence. The resolution reaffirms the universal relevance of the principle of non-violence and the desire to secure a culture of peace, tolerance, understanding, and non-violence. Gandhiji taught us to be the change we used to see in the world. He taught us that where there is love, there is life. He followed the path of ahimsa or non-violence to make us unite. He mentioned the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. I should conclude mentioning some words of Mahatma. Gandhiji advises us to be watchful because our thoughts become our words. Our words become our actions. Our actions become our habits. Our habits become our values. And our values become our destiny. That's all. Thank you. How beautiful. Thank you, Mahbubji, especially the narrative about Gandhi and all his struggles that you've shared in Bangla, and also helping to reiterate this teaching of nonviolence and of harmony across castes and creeds. This is really wonderful to hear. Now, could I please request Mohanda to share a few words? If you could also introduce yourself and then share with us your reading. Kiara Koto Katawa, I just want to first take a minute to thank all of you for these beautiful readings and sharings. They are just so inspiring. I am Professor Mohandara, and I'm delighted to be here with you. I will read from Gandhi's experiments with truth because as Balamohan highlighted in the beginning of our conversation, the process of truth making is experimentation. And what that actually reminds us is that truth is never settled, but rather it's an ongoing journey. And Gandhi reminds us of that. I want to read from a chapter titled Acquaintance with Religions. And I can really relate to this chapter because, as a 26-year-old, when I had first left India and moved to the United States as a graduate student, and I was, 26 years old and sort of in a context where there were hardly any
spiritual spaces that were Hindu spaces of worship. But what there were churches. So at moments of deep loneliness, I would walk into a neighborhood church and have long conversations with the priest. And those conversations I found were great entry points for me to really reflect upon the ways in which the many religions and spiritual conversations perhaps point to the broader ideas of peace, love, nonviolence, and acceptance. So this is from Gandhi's own journey when he had traveled from Gujarat into the United Kingdom. And this is where he is searching and asking these questions. So here it goes. Towards the end of my second year in England, I came across two theosophists, brothers and both unmarried. They talked to me about the Gita. They were reading Sir Edwin Arnold's translation, The Song Celestial, and they invited me to read the original with them. I felt ashamed as I had read the divine poem neither in Sanskrit nor in Gujarati. I was constrained to tell them that I had not read the Gita, but that I would gladly read it with them, and that though my knowledge of Sanskrit was meager, still I hoped to be able to understand the original to the extent of telling where the translation failed to bring out the meaning. I began reading the Gita with them. The verses in the second chapter. If one ponders on the objects of the sense, there springs attraction. From attraction grows desire. Desire flames to fierce passion. Passion breeds recklessness. Then the memory, all betrayed, lets noble purpose go and saps the mind, till purpose, mind, and man are all undone. Made a deep impression on my mind, and they still ring in my ears. The book struck me as one of priceless worth. The impression has ever since been growing on me, with the result that I regard it today as the book par excellence for the knowledge of truth. I've read almost all the English translations of it, and I regard Sir Edwin Arnold's as the best. He has been faithful to the text, and yet it does not read like a translation. Though I read the Gita with these friends, I cannot pretend to have studied it then. It was only after some years that it became a book of daily reading. The brothers also recommended The Light of Asia by Sir Edwin Arnold, whom I knew till then as the author only of the song Celestial, and I read it with even greater interest than I did the Bhagavad Gita. Once I had begun, as I could not leave off. They also took me on one occasion to Madame Blavatsky Lodge and introduced me to Madame Blavatsky and Mrs. Besant. The latter had just then joined the Theosophical Society, and I was following with great interest the controversy about her conversion. The friends advised me to join the society, but I politely declined. With my meager knowledge of my own religion, I do not want to belong to any religious body. I recall having read, at the brothers' instance, Madame Blavatsky's Keys to Theosophy. This book stimulated in me the desire to read books on Hinduism and disabused me of the notion fostered by the missionaries that Hinduism was rife with superstition. About the same time, I met a good Christian from Manchester in a vegetarian boarding house. He talked to me about Christianity. I narrated to him my Rajkot recollections. He was pained to hear them. He said, I'm a vegetarian. I do not drink. Many Christians are meat eaters and drink, no doubt. But neither meat eating nor drinking is enjoined by Scripture. Do please read the Bible. I accepted his advice, and he got me a copy. I have a faint recollection that he himself used to sell copies of the Bible, and I purchased from him an edition containing maps, concordance,
and other aids. I began reading it, but I could not possibly read through the Old Testament. I read the book of Genesis, and the chapters that followed invariably sent me to sleep. But just for the sake of being able to say that I had read it, I plodded through the other books with much difficulty and without the least interest or understanding. I disliked reading the book of Numbers. But the New Testament produced a different impression, especially the Sermon on the Mount, which went straight to my heart. I compared it with the Gita, the verses. But I say unto you that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man take away thy coat, let him have thy cloak too. Delight beyond measure, and put me in my mind of shamal bhats for a bowl of water, give a godly meal, etc. My young mind tried to unify the teachings of the Gita, the Light of Asia, and the Sermon on the Mount. That renunciation was the highest form of religion appealed to me greatly. This reading whetted my appetite for studying the lives of other religious teachers. A friend recommended Carlyle's Heroes and Hero Worship. I read the chapter on the hero as a prophet and learned of the prophet's greatness and bravery and austere living. I will end there. And what I just want to say is what is so powerful in this particular reading is its attention to the notion of plural readings and plural anchorings, connecting the question of the spirit and religion to reason. And I thought that that's really relevant to our conversation today. Thank you so much, Mohanda, for sharing that reading. I especially enjoy the choice of this text in respect to his journeys outside of India as a young man. And that connects a lot with, I imagine, many of us situated in the diasporas of the different parts of the world, us here in Tamaki Makaurau, Aotearoa, many of you who zoomed in from Australia. So it's really touching to hear that many of our struggles in the diaspora are connected through the same kind of spirit of searching. I want to thank everybody who shared their readings today on this day of Gandhi Jayanti. As I said at the beginning, I think it's more urgent than ever, this lesson of secularism and democracy that we live through and that we demonstrate in our practices. After all, it's something that we share in Aotearoa and with India. And so upholding those principles becomes such an important project. I'd like to close now with a karakia that I think speaks really strongly to this sense of wanting to move forward with restrictions aside. It translates like this. It translates, restrictions are moved aside, so the pathway is clear. To return to everyday activities, enriched, unified, and blessed. Ka whakaairia te tapu, kia wātea ai te ara, kia tūruki whakataha, ai, huia e taikie. Thank you everybody for joining us, and this recording will be shared on Facebook so that you can return in detail to some of those texts that were shared. And from me here in Tamaki Makaurau, after having the sun set, I wish you a good evening and a good night, and go well.